everyone. Thanks for visiting my YouTube channel for this video. Today we are going to do a very interesting boat scene. In this boat scene we will be doing three boats which are in yellow color and turquoise blue color, and then they are casting their reflection on the water. So this scene is more or less about the reflections and how simplistically we can do it. So let's get started. So let's start with the first wash. So for the first wash we have to identify the background color. So if you squint your eyes, like if you half close your eyes and try to see the scene, you will see that the entire scene is predominantly having an underground gray color, but it's a gray which is having a little bit of yellow tinge to it, so it's a kind of warm gray. So I'm mixing Naples yellow and ultramarine blue for this kind of gray, and I will so while it is coming down, the I will add in the basic colors of the boats here and the blue color over here also. The water will have this gray color, wherein I will be using more of the Naples yellow. Why it has this kind of color is because of the murkier water or the muddy water. फॉर दोज फॉलोइंग इन हिंदी, मैं बता दूं कि आज हम बोट का सीन कर रहे हैं और उसके लिए ये जो तीन नाव हैं या बोट्स हैं, इनको हम पेंट करेंगे आज, और इसका जो रिफ्लेक्शन है पानी के ऊपर उसको भी आज हम स्टडी करेंगे. तो इसमें क्या है, हम लोगों ने तीन बोट का ड्राइंग बनाया हुआ है और अभी मैं पहला वॉश या पहला जो इसका जो कलर है वो डालने जा रहा हूँ. पहला कलर जो है उसके लिए हमको आँखों को थोड़ा सा स्क्विंट करके या आँखों को आधा क्लोज करके हमको देखना है, और हमको उसका जो बेसिक कलर है, जो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा जो कलर फैला हुआ है, उस कलर को नोटिस करना है, और उस कलर और वो टोन को हम लोगों को लेके चलना है. तो अभी ये जो है एक ग्रे कलर मैंने बनाया हुआ है, येलो ऑकर और अल्ट्रामरीन ब्लू, ये दो कलर्स को मिला के, और यही कलर हम इसमें डालने वाले हैं. ज़्यादा पानी लेंगे और इसको हम इसमें मिक्स करेंगे. तो ये स्टार्ट हो गया मेरा वॉश. तो हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो कलर है ये पानी का कलर है, ये बोट का कलर नहीं है. तो जब हम बोट के नज़दीक आएंगे तो हमको थोड़ा सा इसको कलर को वेरी करना है. तो ये स्टार्ट होता है तो ये एक ग्रे कलर जिसमें कि जो कि अपना नेपल्स येलो और फ्रेंच अल्ट्रामरीन ब्लू मिला के मैंने बनाया है, ये कलर से शुरू होता है. जैसे ही ये नीचे आ रहा है, आप देखिए, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही नीचे आ रहा है थोड़ा सा रॉ अंबर लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों को इसको और थोड़ा वार्म करना है, और उसके साथ ब्लू मिक्स करता हूँ. तो ये कलर और ये कलर में हल्का सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, हाँ, और ये अभी जो कलर बना है ये थोड़ा सा इससे डार्क है और रिच कलर है. तो जैसे ही हम नीचे आएंगे, जैसे ही हम नज़दीक आएंगे, हमको क्या करना है, हमको ये वाला कलर इस पर लगा के एक ग्रेडियंट लेना है. ठीक है, ग्रेडियंट बोले तो मतलब ग्रेडियंट का मतलब है एक स्लोली लाइट से धीरे धीरे ये अपने पास जैसे ही क्लोज आएगा, क्लोज अपने पास आएगा, तो उसको थोड़ा सा हम लोगों को रिचर कलर डालना है, और जितना ये दूर जाएगा हमसे उसको उतना ही लाइटर कलर डालना है. तो देखिए, ये अभी मैं इसको यहाँ से ऐसे लाके इसे पुल कर रहा हूँ. हालांकि मैं इसको इसके ऊपर लेके नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिमार्केशन रखा है, लेकिन उसको भी मैं ब्लेंड इन करूँगा. आप देखते जाइए. तो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया, देखो इधर. इसको थोड़ा पानी लेके हम लोगों को इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ. ये ऐसा एक बॉर्डर की तरह नहीं लगना चाहिए, ये ऐसे फ्लो हुआ है वैसा दिखना चाहिए. इसको हम नीचे लाएंगे. एक्चुअली अभी जो आप कलर देख रहे हैं ये काफ़ी डार्क दिख रहा है, लेकिन सूखने के बाद ये इतना डार्क नहीं रहेगा, थोड़ा सा
अल्ट्रामरीन ब्लू मिक्स करके यहाँ पे डालेंगे। आप अगर आँख को हल्का लाइट क्लोज करके आप देखने की कोशिश करेंगे, आपको ये दिखेगा कि ये जो पानी का कलर है, जैसे ही आप या ये वाले एरिया में हल्का सा ज़्यादा रिच है, जो कि यहाँ पे ये जगह पे लाइट है और ये जगह पे हल्का रिचनेस ज़्यादा है, तो हम इसके लिए ही ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अल्ट्रामरीन ब्लू और रॉ अंबर, ये दो कलर्स पास के एरिया के लिए, और इसको पूरा कोटिंग कर रहे हैं हम, लेकिन बोट को नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी बोट का कलर नहीं डालेंगे, हम डालेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं और इसी में ही बिना सुखाए हम लोगों को बोट का कलर डालना है। तो ये मैंने डाल दिया ये कलर। अब क्या करूँगा मैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो शेप्स हैं, जैसे ये 3 शेप्स हैं, शेप्स मतलब अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 शेप्स कनेक्टेड हों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक टर्कोइस कलर थोड़ा सा ले रहा हूँ और उसमें टर्कोइस कलर में थोड़ा सा लैवेंडर कलर मिला के उसको सबड्यू किया, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा उसको डीसैचुरेट किया, और वो कलर में थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं अभी ये बोट के ऊपर वाले हिस्से में लगा रहा हूँ। एंड यहाँ पे ये कलर अगर सीप इन कर रहा है और ये इसके साथ मिक्स हो रहा है तो इसको होने दे रहा हूँ, मैं बाउंड्री कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ और थोड़ा टर्कोइस कलर लेके यहाँ पर भी। ठीक है, ये देखिए ये जगह पे कलर ब्लेंड इन हो रहा है, वो ब्लेंड इन होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ज़्यादा ब्यूटी, आपका जो पेंटिंग है वो ज़्यादा निखर के आएगा, तो उसको ब्लेंड होने दीजिए, उससे आपको घबराहट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया ये भी हो गया। तीसरा बोट में थोड़ा सा ब्लू और टर्कोइस सेम, हालांकि ये सबसे लाइट होगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लाइट ही रखेंगे। देखो, इसको थोड़ा लाइट रखना है। क्यों लाइट रखना है, क्योंकि फोकस इसमें और इसमें जाएगा, ये थोड़ा सा दूर है, मतलब तो हालांकि ये भी फोकस में है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा फोकस में रहेंगे। ये हो गया अपना बोट का इंटरनल साइड। ठीक है, इसमें जो जहाँ पर भी आपका वाइटनेस है, वाइट दिख रहा है, उसको आप कवर कर लीजिए। ओके, और फिर हम लेंगे येलो। अभी ये जगह को एक टिश्यू पेपर लेके ये जगह को क्लीन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम लेंगे येलो कलर और थोड़ा इसमें भी थोड़ा नेपल्स येलो मिलाएंगे, डीसैचुरेट करेंगे इस येलो को, और थोड़ा सा गैप देके इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेना है और इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेना है। देखो, ये ऑटोमेटिक सूखना स्टार्ट हो गया, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक ले के, तो यहाँ पे अपना येलो जो है वो नीचे तक जाएगा, यहाँ उसका रिफ्लेक्शन आएगा, राइट। तो ये आप रिफ्लेक्शन इसके ऊपर ही उसको ले लीजिए। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा अगर ये गीला होता तो और बेटर होता, बट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर आप इसको ब्लेंड इन करने दीजिए। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि कलर थोड़ा सूखने जैसा हो गया तो स्प्रे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कलर को क्या है, ये लेवल पे कलर को ब्लेंड इन होने के लिए चांस देना है। ये वाला हम लोग का स्मूथ रहेगा, यहाँ पे कुछ भी ब्लेंड इन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो नीचे वाला ये वाला जगह, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन इधर आना है, हमको कलर को ब्लेंड इन करके इसका ये कलर इधर दिखना है। ओके, तो ओके, हो गया। अभी इसको हम लोगों को सुखाना है। ओके, तो इसको हम लोग अभी सुखा देंगे। सुखाने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होगा। तो अभी फ़िलहाल, अच्छा, और एक चीज़ है जो मैं करना भूल गया हूँ, ये वाले जगह पे थोड़ा सा ब्लू आएगा, सॉरी, ये मैं भूल गया था। ये भी इसके साथ येलो के साथ ब्लेंड इन होने दीजिए। इसका ब्लू का भी नीचे में रिफ्लेक्शन आएगा, वो भी आप
कर दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, बाकी इसमें जो भी छोटे मोटे जो टचेस है वो हम लास्ट में करेंगे। इसको सुखा दीजिए, उसके बाद सुखाने के बाद आफ्टर दिस थिंग इज completely ड्राई विल गेट बैक। सो आई एम reiterating the same thing in English. First I started with a lighter gray color using ultramarine blue and Naples yellow. Slowly while coming down, I mixed ultramarine blue with a little bit of raw umber, and slowly I have created a gradient from the top till the bottom. After that I used little bit of turquoise and lavender mixed together for the internal side of the boat. After I did that, I have used yellow color, which is chrome yellow and Naples mixed together over here, and I deliberately wanted the color to mix with the water here, because this boat will cast its reflection on the water. So यहाँ का, so the yellow of this boat will get captured in the water. So I have deliberately done it. Now I will dry it and return back. Thank you. Hello, folks. So we are back with our painting. Now this is dried. So we will now lay the midtones. For the midtones, first we will lay the midtones of the reflection. Then there are some places where in the boats itself. So for the midtones, I will take some uh, raw umber. I have to squint my eyes or half close my eyes and see what's there, what's in there. सो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं अभी रॉ एम्बर, थोड़ा सा मैरून कलर और ब्लू कलर, अल्ट्रामरीन ब्लू, ये तीनों को मिक्स करके एक कलर बनाया ये, और थोड़ा सा ब्लू और रॉ एम्बर, ओनली रॉ एम्बर और ब्लू, ये एक कलर बनाया। ये दो कलर्स में हम लोगों को इसको करना है। ये रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़, फर्स्ट स्टार्ट विथ squinting my eyes. I will I mean half closing my eyes. I will try to put in the reflection in bold patches. Okay, so I will put in the reflection in bold patches. I am using a big fat brush. You can see I am not using a thin brush to do this, because I want more area to be covered, and I want it to be covered in the fastest possible time. Then थोड़ा सा मैरून मिक्स करके और थोड़ा सा, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कलर वेरिएशन. सो आई एम ट्राइंग टू गेट इन अ लिटिल बिट ऑफ कलर वेरिएशन, because otherwise it will look very boring. Okay, so and now we will have a little bit of transparency here, like that, and like that. ठीक है, and then this one would be even more darker. So थोड़ा सा blue लेता हूँ, taking a little bit of blue. Mind you, this is the mid tones, this is not the dark tones, so I will make it little more darker later on, but not now. Right now I am seeing the second dark color. Okay, so I'm putting the second dark color here now. So I have coated it, and in this, if you want to add in a little variation, so you can put in a little bit of blue here and there, little bit of yellow here and there. See here, just to make it look little natural. Okay, now we will work on the inside of the boat. So for that I am taking ultramarine blue, and so wherever I am seeing a shadow or something, I am putting a kind of dash
And then I think I have to use a smaller brush now, because the area is little congested now. So what I will do, based on how the shadow is falling on this area, just leave a certain touches here and there. So here there is a shadow, okay, and then like that, there is a boundary of the boat, or the border of the boat. ये बॉर्डर, बोट का बॉर्डर है, उसको हम थोड़ा सा ग्रे कलर में इसको हम करेंगे। दूसरे बोट में जाएंगे, तो दूसरे बोट में आप देखिए यहाँ पे अल्ट्रा मरीन ब्लू और जो अपना बचा हुआ ये कलर है, दोनों को मिक्स करके मैं एक ग्रे टोन ले रहा हूँ। तो ये क्या है, ये यहाँ से देखो ऐसे है, ये शैडो यहाँ से लेके यहाँ तक है। it's like this, the shadow is like that, and it's falling like that here also it is like that, okay. So I am trying to you know create a 3D impression of the boat using the shadows here and there, okay. And then this third one also, it will be little lighter, the shadow, the tones will be little lighter. So here I put it till here, and then you have a plank. This plank will be in tone of yellow, okay. ये प्लैंक को ऐसा करके छोड़ देंगे, and here there is a shadow on the boat. ये बोट का शेडो इधर गिर रहा है, एंड सेम ये बोट का शेडो इसमें गिर रहा है। सो इसको थोड़ा डार्क टोन डाल के ऐसा छोड़ना है, डालना है, ओके। एंड नाउ देयर इज turquoise green color net over here. So this net we will put. Always make sure that you are not putting a flat color, like you are mixing in some colors and putting, because otherwise it will look very very boring, okay. So in any flat color that you see, there are millions of colors actually. So whenever we are trying to mimic anything from the nature, we must always put in more colors, like add in more colors. Keep the tone same, but add in more colors. That will be beneficial, that will look more natural, okay. Now let's put it like this. ओके, एंड देन इसको थोड़ा, ये जो बॉर्डर है इसको, बॉर्डर को ऐसा बनाना है, एंड ये बॉर्डर को ऐसे बनाना है, ओके. सो लेट इट फर्स्ट ड्राई, देन वी विल कम बैक एंड पुट द डार्क शेड्स. सो फ्रेंड्स, अभी ये सूख चुका है, एंड अभी हम इसमें डार्क कलर्स और थोड़ा बहुत इसमें ब्यूटी ऐड करेंगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जो प्लैंक है, दिस प्लैंक इज़ लुकिंग वेरी फ्लैट. सो इसको थोड़ा सा वाटर लिफ्टिंग का ज़रूरत है. सो आई एम लिफ्टिंग आउट लिटिल बिट ऑफ वाटर, ओके. सो नाउ आई वॉज वॉचिंग दी
reference photo properly. So I saw कि यहाँ पर एक there is one shadow which will come like that. Okay, and basically this it's a kind of upside kind of thing, like it's a 3D kind of thing. Then there will be shadows here. That's why I left it here, because इसको सूखने देने के बाद ही ये shadow बनाएंगे तो it will look better, and color will be fresh, not muddy. So we need to give in some amount of time in between. Now I am mixing some dark color like ultramarine blue and burnt sienna together. Okay, little bit of orange if you want, you can add for warmth, and wherever you need very dark, you can put in at those places. Okay, so there are one thing we need to do is we need to create the border of this boat. So the border of this boat, if you see, is not very dark as compared to this portion or as compared to this color here. So we will mix a color which is neither very dark nor very light, and we will do the borders of the boat, because the borders of the boat define the boundary of the boat. So let's finish that first. See here. Okay, इसमें थोड़ा सा इसको डार्क करके इसके बॉटम में like that, sorry, like that. Okay, same here on the bottom side. Okay, and few touches here and there, little bit of Naples yellow to be mixed for this border, like that. Okay, and okay, done. Now we will do the darks over here in the water and wherever we see in the boats. There are 3 boats. Wherever you find very dark, you put a mixture of burnt sienna and ultramarine blue. So if I see motor the motor of this boat, then this motor is also very dark. So I am mixing a little bit of Indian red, and along with the red I am mixing ultramarine blue, because at certain places of this engine it is having a red tinge. Then I'm just randomly moving my brush so that I get a nice feel of a motor here, the shaft of the motor here. Then there will be a propeller here, and same thing if you see. Okay, there is a tire here. Now once this thing is done, let's work on the water, the dark areas of water. For that we would need good quantity of ultramarine blue, and we would need orange color. So the color has to be very dark now.
So I will take a little bit of turquoise green also, and mix it with this thing. Now again, by squinting your eyes, you have to place this color strategically and leave in the areas where you don't want this so much of darkness to be there. So this exercise, while painting you will feel okay, it might not work, but once it dries out and you see the final outcome, you will realize that no, I was saying correct. So now little bit of raw amber. So the dark will slowly fade away to light like that, and in the edges, there is darkness like that. Okay. Now we'll take the dark and just take in a little bit of blue color and drop in here as a part of the reflection. Okay, that's it, that's it. Okay, ये हो गया. अभी there is a little bit of blue in the boats also, so let's mix in that blue color and let's take in that, give in that blue tinge, which will give a nice beautiful feel to the boats. Let's take the red, mix it with a little bit of burnt sienna, tone it down. Okay, like that, and it should be little dark here. Done. This portion will have a little yellow tinge, a little glossiness here, and then once everything is done, just mix a little bit of this dark blue color with a little bit of lavender color and little bit of raw umber, so we will get a color like this. So this is to give ripples in the water. Okay, so what we have to do, we have to give ripples in water like that. You can make it a little more lighter. Okay, on this side also ripples will be on all the sides.
So let's do one thing. Let's put the ripples till a certain height, and then we can, slowly we can try and eliminate or fade out. Not eliminate, but rather fade out. So for fading out, you need more water, like that. Okay. So this is like the simplest treatment you can give. Even if you give a lot complicated treatment, it might not look good because the freshness of color will go. So see. Okay. So now just a few touches here and there, and I think this painting will be done. So now you can see how realistic the uh, reflections are looking. Now we will add in a small little details in the boats. First and foremost, this portion will go like that, and so basically the light is falling here. Here the shadow is being cast, and like that. So here you see like that. Very lightly we are putting the tones, very lightly, see, very lightly. So just a slight tonal difference will make it look 3D. Okay, so uh, here um, here another blank. So here we will put a kind of fishing net here. Here there is a fishing net. We'll lift some color and make this fishing net look somewhat real. And on the bottom there is shadow. Okay. Now in the bottom part there will be a wedge. Okay, so let's dry this portion and then we will come back with a little bit of treatment of white, little highlights here and there, and this will be over. Hi there. So our painting is almost done. So I have put in some dark, reflection lines over there on these areas and these areas. So that did not get captured, but very simple, like the way I did it here. Now I am using pure Chinese white for putting the highlights. So this is the shaft of the propeller of this motor. So that is going to reflect in a lot of light, and then couple of strings which are uh, holding the fishing nets together. Then there are areas which will get catch in the light, like these edges, and then slightly, you know this is going to create the final magic. Okay, so don't shy away from putting in the highlights. Don't put in too much, but whatever is needed must be done. So then we have some strings or some ropes which are tying the boat together in place like this.
Okay, and then try to make the um, highlights as thin as possible. Hmm? Okay, so you can see now how the boat is popping up to life and looking more or less like a 3D thing. Then you have a rope from here going like that inside. You have a rope from here to here. Okay, and here also we will have a few, ropes tying in the fishing net together. Hmm. And just to be a little more specific and proper, like just to be a little bit more detailed, I'll mix in some darks, and under this rope we will put in the darks. Okay, so basically here we are having the sharpest white color, like the more the reflection underneath it, you will have more shadows, more dark shadows. Okay, so hope you guys learned something from this video. This is a very very simple simple image and very simple approach I have tried to explain you. We can go very very complicated also, but that was not the intention of this video. And if you like this video and if you learned something, then kindly share it with your friends, and do subscribe my channel. You will get to see more such amazing videos in times to come. Thank you everyone.